ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ लेक्चर पढ़ेंगे रिगार्डिंग टू द लेक्चरशिप लिंग्विस्टिक्स। नंबर 1 इज एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। एसिमुलेशन इज मेनली ऑफ एसिमुलेशन मेनली 3 किस्म की होती हैं, ठीक है। इसी तरह एच इन द वर्ड ही इज ए, ठीक है। एच ग्लेटल साउंड है, एच, ठीक है। आगे देखते हैं जी। द इनिशियल कॉन्सोनेंट इज यॉन्ग इज ए साउंड कौन सा है जी? जो है पैलेटल साउंड है बेसिकली ये। आगे जी, टी, डी, एन, आई और आर डैश एल्वोइलर साउंड कहलाता है बेसिकली, ठीक है। पी, बी, एम एंड डब्ल्यू आर लाइबल, ठीक है। बाइबल, पी, बी, एम, डब्ल्यू, डब्ल्यू, ठीक है। तीन चारों साउंड जो हैं वो लिप्स राउंड होते हैं, तो जो है बाइलेबियल साउंड है, ठीक है। डैश आर जी वायलर आर द articulated by raising the back of the tongue towards the soft palate. Number next, the articulated G plate are volar articulated by the tip and the blade blade of the tongue against the teeth ridge and the rising of the front of the tongue towards the palate, basically that. Next करते हैं जी, sound articulated with the tip of the tongue, or the blade of the tongue against the teeth ridge are called G alveolar. Sound articulated by the lower lip placed against the upper teeth are called G लेबोडेंटम, ठीक है। लेबोडेंटम यानी कि जो लव के साथ भी हो, जैसे फे फे फे, एफ एफ एफ, ठीक है। Dash is the process by which one speech sound gets changed to another under the influence of another. जी जी बेसिकली assimilation कहलाता है वो। नेक्स्ट है जी, R dash are gliding sounds during the articulation of which the speech organs glide from one vowel's position to another. जी basically semi vowels होता है वो, ठीक है। The study of the way that sequence of words are ordered into phrases, clauses, and sentence is called जी basically क्या है? Syntax कहलाता है। The study of elementary speech sound is called जी phonology, and which among the following is not a branch of linguistics? जी कौन सी? philology, ठीक है, philology. Which among the following does not constitute the general methodology of science? जी basically speculations. Dash is the discipline where the methodological perspectives of both linguistics and sociology converge, basically socio-linguistics कहलाता है ये। नेक्स्ट करते हैं जी, dash refers to an individual's equals and native command of 2 or more languages। जी बेसिकली जो है मल्टीलैंग्वेलिज्म है, ठीक है। ए पर्सन हु कैन यूज टू लैंग्वेज, ठीक है। एक जो कि दो से ज्यादा लैंग्वेज, शायर है, दो से ज्यादा जो लैंग्वेज इस्तेमाल, दो लैंग्वेज इस्तेमाल करता है वो बाई लैंग्वेज कहलाता है। एक इस्तेमाल करता है मोनो लैंग्वेज, और दो से ज्यादा करता है तो मल्टाई लैंग्वेज कहलाता है, ठीक है। हु इंट्रोड्यूस इन लिंग्विस्टिक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ परफॉर्मेंस? जी नॉम चॉम्स्की, ठीक है, एक बहुत बड़ा नाम है। Who introduced in linguistics the concept similar of Chomsky's competence is performance? G. Ferdinand de Saussure. Which among the following implies the actual meaningful utterance of the individual speaking or writing a given language? G. Basically क्या है जी? Both paroles and performance. Next जी, dash is the totally of the speech habits of an individual। जी idealects, ठीक है। नेक्स्ट है जी, the language variety which has certain features which are typical of certain disciplines, topics, fields, occupations and social roles played by the speaker is called जी क्या जी? क्या करता है जी? बेसिकली रजिस्टर होते हैं वो, ठीक है। dash the term semiology was introduced by जी semiology Ferdinand de Saussure।
Dash the scientific study of the science is called जी किस चीज साइंस जो है बोथ एंड बी यानी कि जो है सेमियोटिक्स भी है और सेमियोलॉजी भी है ठीक है बेसिकली साउंड है जैसे वाउ जैसे जो है पंक्चुएशन वगैरह की साइंस है ठीक है अच्छा द टाइप ऑफ स्टडी ऑफ द चेंजेस इन लैंग्वेजेस ओवर a span of time is called जी बेसिकली डायक्रॉनिक्स है नेक्स्ट आ जाती है लैंग्वेज इज नेवर स्टैटिक इट गोज ऑन चेंजिंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड जी डायनेमिक नेक्स्ट है जी ह्यूमन बीइंग्स कैन टॉक अबाउट experiences objects and events which are not present at the time and place of speaking this property of language is called जी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है ठीक है नेक्स्ट आ जाते हैं ह्यूमन लैंग्वेज इज स्ट्रक्चर्ड एट द लेवल ऑफ फोनीम्स एंड मॉर्फीम्स एंड एट द लेवल ऑफ वर्ड्स this property of language is called duality of structure नेक्स्ट है जी फाइंड द odd one out जी odd one out करेंगे जी हरमैन गनरेट the masculine theory of the origin of language was advanced by G. O.T. Jesperson ठीक है द डिंग डोंग थ्योरी ऑफ द ये बेसिकली फिर डिंग डोंग थ्योरी आ गई है ठीक है हमने ऊपर पढ़ी थी डिंग डोंग थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज वाज एडवांस्ड बाय जी कैसे जी मैक्स मुलर ने जो है की थी ठीक है द थ्योरी व्हिच इज बेस्ड ऑन द assumptions and language origin result of the elementary explanation of pain surprise prayers or wonder ठीक है ये पू थ्योरी ठीक है पू थ्योरी अच्छा दीज आर प्रूफ थ्योरी ये ऑलरेडी हमने की हुई है ठीक है अच्छा द स्टडी ऑफ साइंस इज टर्म्ड एज सेमेटिक्स ठीक है इट इज जनरल since it refers to the creative capacity of language users to produce an endless numbers of new sentence is contrast to the communication system of animals is called जी प्रोडक्टिविटी ठीक है प्रोडक्टिविटी आ जाती है जब जो है हम इसको मुख्तलिफ जो है वो करते हैं ठीक है अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं जी Dash is term introduced by Chomsky to describe the actual use of language is concrete situations. जी performance के लिए इस्तेमाल होता है ये. The system of communication within a community, basically जो है community, ठीक है, basically language. A pair of terms introduced by Noam Chomsky in 1965 to describe native speakers' intuitions about the grammatical correctness or otherwise of sentence. जी क्या कहलाता है जी acceptable and unacceptable कहलाता है. The study of language and mind which has greatly advanced or an understanding of the way in which we acquired language is जी psycholinguistics कहलाती है ठीक है. Who argues the language is a unique evolutionary development of the human species and distinguished from modes of communications used by any other animal species. जी नॉम चॉम्स्की बेसिकली ये नॉम चॉम्स्की के ही जो है वो खाम होते हैं इतने उल्टे उल्टे ठीक है अच्छा जी देर इज ए कॉन्सोनेंट साउंड इन द इंग्लिश आईपीए जी ऑलरेडी 25 है ठीक है दीज आर द एंड ऑफ योर लेक्चर